Hi everyone, good evening. This is Shefali Singla, and today we are going to start with our series in which we will be learning the concepts through questions. आज से हम लोग अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स लर्न करेंगे थ्रू द क्वेश्चंस. So for the first 2 days we will be learning the concepts through questions for COA, and उसके बाद मैं algorithms and data structures की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कोआ एंड डिजिटल के काफी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं मास्टर क्लास में. कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं मैंने यूट्यूब पे एंड क्वेश्चंस किए हमने मास्टर क्लास में. जिन लोगों ने मास्टर क्लासेस कोई भी अटेंड नहीं किए तो बेटा मैं आपको बता दूं, मास्टर क्लासेस टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म पे होती हैं एंड दोज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो आज वाले सेशन में हम लोग कोआ के क्वेश्चंस कहते हैं. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज बेसिकली फ्रॉम द डेस्क. तो क्वेश्चन को रीड कीजिए. हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगी ताकि आप स्टेटमेंट को रीड कर लो, अंडरस्टैंड कर लो, आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और फाइंड आउट क्या करना है. And after that, I'll be providing a detailed solution. So here is the first question. Just read the statement. It is saying that the disk, here the questions concern a disk with a sector size of 512 bytes. आपको sector size दिया है, एक surface पे कितने tracks है, that is given. Per track, how many sectors are there, that is given. There are 5 double-sided platters and every seek time is given in the question. We have to find out the capacity of track in bytes and this S is the capacity of surface in bytes. अब अगर हमें capacity find करनी है, do we need to use the seek time? In the question, you are given with the every seek time. तो कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दी हो सकती है जो हो सकता है आपके सॉल्यूशन में यूजफुल ना हो. सो यू हैव टू थिंक वाइजली. So let's first of all understand the disk structure. Disk is जो भी डिस्क पे हमारे पास ट्रैक्स होते हैं, जो भी डेटा स्टोर होता है, दैट इज in the form of tracks, and further the tracks are divided into the sectors. Let me draw here. So here on a disk we have tracks. Let me call this as track 1. This is track 2. जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, जो भी डेटा स्टोर होगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द ट्रैक्स. जो मैं डॉटेड लाइन से बना रही हूँ, दीज आर द tracks. And now further these tracks are divided into the sectors. This is, let me call sector 1. This is divided into the equal sized sectors. So here if we have to store the data, यहाँ पे हमारे पास डबल, जब हम एक ट्रैक की कैपेसिटी फाइंड कर रहे हैं, then we need not to find out, we need not to use the double-sided tracks. अब यहाँ पे हमें क्या बोले, T is the capacity of a track. We have to return the value of T and S. T is the capacity of a track in bytes. तो एक ट्रैक की कैपेसिटी क्या होगी? We have said that here the track is divided into the equal size sectors. तो track will be what? It will be the number of sectors. एक ट्रैक के ऊपर कितने sectors बन रहे हैं? This is one sector. I'm calling this as a sector. तो it is equal to number of sectors प्लस आपको क्या दिया गया है? सेक्टर साइज. आपको ये तो पता चल गया कि एक ट्रैक के ऊपर लेट्स से 10 सेक्टर्स आ रहे हैं. अब एक सेक्टर का साइज कितना है? इफ यू नो दैट देन इजीली वी कैन फाइंड आउट द ट्रैक कैपेसिटी. सो हियर capacity of track will be nothing but capacity of track will be number of sectors into sector size. Now let's see what information we are given with. Here the sector size is given as 512 bytes. So sector size is 512 bytes. And number of tracks per surface,
although it is not required for finding the value of t, number of tracks per surface are given as 2000 and 50 sectors per track. Number of sectors per track. एक ट्रैक पे कितने सेक्टर्स आ रहे हैं? That is given as per track, that is given as 50. So can you find out the capacity of track? सब कुछ क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है. अगर आपको ये पता है कि कैपेसिटी क्या होती है ट्रैक की, इजीली यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट. सो एवरीथिंग इज गिवन टू यू. What will be the capacity of track? Number of sectors are given as 50 and sector size is given as 512 bytes. अब अगर बेटा आप ऑप्शंस को देखते हो, मैंने आपको हमेशा बोले जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ऑप्शंस को भी एक बार देख लीजिए. If we have a look over the options, it's given as like 50k, 25k, 40k, something like that. So instead of taking 512, you can consider this as approximately 500 bytes. So 500 into 50, that comes out to be 25,000. So it comes out to be 25k. Approximately, this comes out to be 25k. On the basis of this, we can eliminate option 1 and option 4. Now we have to find out the capacity of each surface. Now we have discussed that each surface is divided into the tracks. Surface capacity, surface को हमने सबसे पहले किस में डिवाइड किया? ट्रैक में. Surface capacity is nothing but हर सरफेस के ऊपर आपके पास कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं, नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन ईच सरफेस इनटू, अब ट्रैक के ऊपर आप डेटा को स्टोर करवा रहे हो, सो विल टेक द ट्रैक कैपेसिटी विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. ऑल्दो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते थे नंबर ऑफ सेक्टर्स इनटू सेक्टर साइज, बट सिंस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, सो आई एम नॉट राइटिंग दैट अगेन. इट इज ट्रैक capacity. So now substitute the values here and let me know what answer you guys are getting. Surface capacity is number of tracks into track capacity, which we have already calculated. So quickly substitute the value. Already मैं दो options eliminate कर चुकी हूँ, so answer will be either option B or C. What will be the answer? How many number of tracks are given? Number of tracks per surface are given as 2000. So this comes out to be 2000 into track capacity is given as 25k. So 25 into 2 is 50 and then 3 zeros 50,000 and k. So it is 50,000 k. That is nothing but option C. So correct answer for this question is option C. प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन सीरीज में जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे एंड मेजॉरिटी विल बी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द यूजीसी नेट एग्जाम और गेट एग्जामिनेशन, बिकॉज यू नो दैट इवन अभी जो री एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी हमने देखा कुछ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं. सो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस आर जस्ट लाइक द सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच यू कैन ट्राई. ओके, सिंपल, क्लियर. बेटा एक बार फटाफट से चैट सेक्शन में कमेंट करके बता दो क्लियर है, ऑडियो वीडियो भी ठीक है, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आई है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here we are given with the memory size of m address lines and m data lines is given by. आपको मेमोरी साइज बताना है किसके लिए? जहां पे आपके पास n एड्रेस लाइंस है and m data lines are given to you. If we have a look over the structure of the memory, we know that it's a block which is divided into equal sized cells
equal sized cells. बाय डिफॉल्ट मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, ऑल्दो यहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। हमने दो तरीके की मेमोरी पढ़ी है, बाइट एड्रेसेबल एंड वर्ड एड्रेसेबल। वर्ड एड्रेसेबल में आपके पास वर्ड का साइज डिपेंड करता है प्रोसेसर के ऊपर, प्रोसेसर कितने बिट का है, एंड बाइट एड्रेसेबल इज द डिफॉल्ट वन वेयर द साइज ऑफ अ वर्ड इज फिक्स्ड, साइज ऑफ अ वर्ड, कंट्रोल वर्ड इज फिक्स्ड। तो अब यहाँ पे हमें बोला है n एड्रेस लाइंस। n एड्रेस लाइंस मींस अगर आपके पास मान लीजिए 3 बिट्स हैं, दैट मींस एड्रेस कितने बिट्स का है आपके पास, 3 बिट्स का। सो विद 3 बिट्स हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस और हाउ मेनी ब्लॉक्स कैन यू रिप्रेजेंट? Indirectly I'm asking that with 3 bits how many combinations are possible. So it is 8 combinations, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 100 101 110 and 111. So 8 combinations are possible. Here we are given that we have n address lines. So with n address lines, how many combinations will be possible? It will be 2 raised to power n minus 1. Combinations 2 raised to power n है, रेंज क्या होगी एड्रेसेस की? सिंस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, हमें 0 को भी इंक्लूड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे -1 लिख रही हूँ। ऑल्दो आपसे यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटी पूछी है, सो नंबर ऑफ वर्ड्स will be 2 raised to power n. और एक वर्ड कितना डेटा सेंड कर रहे हैं? देयर आर m डेटा लाइन्स. So if we have 2 raised to power n cells and m is the word size, so this capacity comes out to be 2 raised to power n into m. Although only on the basis of this you could have eliminated all the options 2 raised to power n, 2 raised to power n, 2 raised to power n. So we are just getting the answer C. So correct answer for this question is it's option C. I hope this is also clear. समझ में आ गया? Now, let's move on to the next question. This is based on the operating system, the concept of fragmentation. What will be the answer for this question? यहाँ पे आपको 3 statements दी गई हैं, statement A, statement B, statement C, and you have to tell that which of the following statements are true. I'm giving you 30 seconds. Just read all the statements, identify that which statements are true, and write that in the chat section. So here all the combinations are given to you. Only statement A and B are true. Only options A and C is true. B and C is true. A, B and C is true. Can you tell me that what will be the correct answer for this question? आपको सिर्फ तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ के एनालाइज करना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू टेल मी दैट व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू. कोई कैलकुलेशन नहीं है, नथिंग इज देयर. It's based on the concept of memory management, fragmentation, internal fragmentation, external fragmentation. Statement 1, that is option statement A, is it correct? External fragmentation exists when there is enough total memory space to satisfy a request, but the available space is contiguous. So if I talk about, okay, so if I talk about memory management, तो कितने तरीके में आप अरेंज कर सकते हो? Option is A. That means correct answer is 1. That means you are trying to say that option A and B is correct. Okay, let me give you some hints. उसके बाद आप बताइएगा. So आपके पास जब हम memory management की बात करते हैं, we have two ways of arranging the memory, managing the memory. One is contiguous memory allocation and the other one is non-contiguous memory allocation. Contiguous and non-contiguous memory allocation. In contiguous memory allocation, we have, first of all, fixed partitioning scheme. Here we have fixed partitioning scheme.
That means आपके पास number of partitions fixed हैं. You cannot make the changes to this one. Fixed partitioning scheme. Fixed partitioning scheme में क्या होता है, आपके पास number of partitions fixed हैं. For example, there are, मैं दो ही partitions ले रही हूँ. एक partition का size है 100K and दूसरी partition का size है 250K. Now there is one process P1 which is having a request of 230K. 230K की memory use करनी है, तो first block assign नहीं हो सकता. Let me call this as block 1. This is block 2. 230K की request satisfy कौन करेगा? Block 2. So process 1 will be getting the space. अब process 1 की requirement 230K की थी, तो total 250K में से 230K is used. 230 is used. Pending is how much? 20K. अब ये जो 20K की मेमोरी है, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोसेस P1. ये ब्लॉक प्रोसेस P1 को एलोकेट हुआ था, बट इट इज नॉट यूटिलाइजिंग दिस मेमोरी. तो ये इसे हम क्या बोलते हैं? बिकॉज दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ P1. P1 को असाइन हुआ है, बट P1 यूज नहीं कर रहा. सो दिस इज नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. बिकॉज मेमोरी गेट्स वेस्टेड. यहाँ पे मान लीजिए आपके पास प्रोसेस P2 है जिसको 100K की मेमोरी चाहिए थी. नाउ प्रोसेस P3 इज कमिंग विद द रिक्वेस्ट ऑफ 15K. Although 20K of memory is available, but still this memory cannot be allocated to process P3 because of the fixed partitioning scheme. अगर process P3 को allocate करते तो आपके पास number of partitions बढ़ जाएंगे, so it won't be a fixed partitioning scheme. तो fixed partitioning scheme में number of partitions change नहीं होते हैं, so we can say that fixed partitioning scheme is suffering from a problem of internal fragmentation. इसको दूर करने का तरीका क्या है? The way is कि यहाँ पे number of partitions को fix ना करके variable कर दो. उससे क्या होगा कि अगर ये space available है, this can be allocated to some other process. So in order to remove the problem of fixed partition scheme, we have the next one, that is variable partitioning scheme. Next approach here is variable partitioning scheme. मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, उसके बाद आप दोबारा ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को. वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम. In variable partitioning scheme, processes will be getting the memory as per their requirement. तो variable partitioning scheme में आपके पास एक big chunk of memory होता है. One big chunk of memory is there. Now, as per the request of the process, the memory will be allocated. For example, we have 500K of memory, out of which P1 is requesting for 230K. तो इसको 230K की ही memory मिलेगी. This is getting 230K. Now next process P2 is coming up and it requires 100K of memory, so it will just get 100K of memory. Then process P3 is coming up that requires let's say 230 20K of memory, so it gets 20K. Now process P4 is coming up. We have total 500K, तो उसमें से मैं ले रही हूँ यहाँ पे 250, 350, 150K ऑफ मेमोरी इज एलोकेटेड टू प्रोसेस P. तो जितनी जितनी रिक्वायरमेंट थी बिल्कुल उसी साइज का ब्लॉक असाइन हुआ. नाउ लेट्स अज्यूम दैट P2 हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन. P2 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो ये मेमोरी रिलीज हो जाएगी. P4 has also completed its execution, so even this memory gets released. Now there is some process P5 coming up. आपके पास नया process आया P5. P2 और P4 की execution complete होगी तो memory release होगी. P5 की requirement है to get 200K of memory. अब आपके पास फ्री स्पेस कितना अवेलेबल है? 100K plus 150, 250K मेमोरी इज अवेलेबल. प्रोसेस P5 की जो रिक्वायरमेंट है वो तो अवेलेबल से कम है, बट स्टिल द मेमोरी वॉन्ट बी एलोकेटेड बिकॉज दिस इज कंटिन्यूस. कंटिन्यूस मीन्स एक कंटिन्यूस चंक चाहिए, कंटिन्यूस मेमोरी चाहिए. कितनी? 200K की यहाँ पे अवेलेबल है, बट वो टुकड़ों में अवेलेबल है. इट्स अवेलेबल इन द पार्ट्स.
So this cannot be allocated. This problem is known as external fragmentation. External का मतलब क्या होता है? बाहर. So this memory is not under the control of any process. किसी process के control में नहीं है, but still we cannot allocate it because enough space is there, enough space है, but that is not contiguous. Because we are talking about the contiguous memory management. So this variable partition scheme may suffer from external fragmentation. तो इसका solution क्या आता है हमारे पास? That we go for, यहाँ पे memory क्यों waste हो रही है? क्योंकि contiguous नहीं है. So that's why in order to overcome this problem, we go for non-contiguous memory allocation, जहाँ पे आपके पास concept आता है paging, segmentation, inverted paging and so on. I'm not going into the details of paging as of now because for this question it is not required. So inverted paging, multi-level paging, segmentation, and so on. Paging, then we have segmentation, and so on. Okay, so one of the solution for external fragmentation, fixed partition scheme के लिए हमने देख लिया कि variable partitioning scheme पे आ जाओ, external fragmentation होगी. एक तो solution ये है कि paging का concept use करो, and other one is जितने भी आपके पास free spaces available हैं, move these to one corner of the memory. तो उससे क्या होगा? आपके पास एक बड़ा ब्लॉक बन जाएगा फ्री स्पेस का. सो 100K एंड 150K. बाकी P1 और P3, these are the running process. These will be going to other end. So this process is known as compaction, but this is not suggested क्योंकि जब आप processes को move कर रहे हो, memory को move कर रहे हो, तो उसमें कुछ ऐसे processes हैं जो running processes हैं. तो जब आप रनिंग प्रोसेसेस के लिए ब्लॉक चेंज करोगे, मेमोरी एड्रेसेस विल गेट चेंज. सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नॉट रिकमेंडेड, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर द external fragmentation. Now, whatever concept we have discussed, on the basis of that, can you give it a try that what should be the correct answer? So 3 statements are given to you. Just let me know what should be the answer for this question. इससे ज्यादा हिंट तो नहीं ही हो सकते, इसके बाद तो फिर सीधा आंसर आएगा. बट आई हैव कवर्ड almost all the points which are given in the question. So this is the overview of the memory management जो आप operating systems में पढ़ते हो. All right, so here it is saying that external 4. External fragmentation, Priyanka, you are missing out one point. External fragmentation exists. External fragmentation कब आता है? जब आपके पास enough memory space available है request को satisfy करने के लिए, to satisfy a request, but the available space is contiguous. External fragmentation कब आता है? जब आपके पास space तो available है, but it is not contiguous. Then only we can say that external fragmentation occurs. Majority students opted for option 4 because पूरी statement पढ़ के सही लग रहा है. यहाँ पे एक गेम घुमा दिया. यहाँ पे अगर नॉन वर्ड दिया होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती. अवेलेबल स्पेस है बट इट इज नॉट कंटिग्यूस. अदरवाइज अगर कंटिग्यूस होती तो फिर तो रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो ही जाती, राइट? So this statement is false. क्यों false हुआ? Because यहाँ पे एक word miss कर दिया, that is non-contiguous. Since statement A is incorrect, so A cannot be the answer, B cannot be the answer, D cannot be the answer. बाकी फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, बाकी की स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. दिस इज सेइंग दैट मेमोरी फ्रेगमेंटेशन कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. बिल्कुल हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. One solution to external fragmentation is compaction. We have talked about compaction. Definitely yes. So one of the solution for external fragmentation is compaction. Even that statement is true. So A is false, B and C are true. So correct answer for this question is option 3. Got some idea? Now let's move on to the next question.
Oops, I guess we have missed one. Okay. Just read out the problem statement and see what is given and what they are asking for. Suppose you have 8 black and white images. आपके पास black and white images कितनी है? 8. Black and white images are 8. With ये pictures किससे ली गई है? With 1 megapixel camera. 1 megapixel. Then it is saying that we have one 8 color image. 8 color image. कितनी है? Colored images. We have 8 black and white images and one colored image. One colored image. And colored image लेने के लिए 8 megapixel का कैमरा यूज किया गया. It is 8 megapixel. So in order to save these 9 images, total images कितनी होगी आपके पास? 9. One colored image and 8 white, black and white images. So how much hard disk space in total do you need to store these images on your computer? आपको कितनी hard disk space चाहिए इन images को store करने के लिए? 1 megapixel means you can take this as a byte. So 1 pixel को store करने के लिए 1 byte is required. So this means that 1 megapixel means 1 megabyte is required to save one image. So 1 pixel is nothing but, in order to save 1 pixel, 1 byte of memory is required. तो इसका मतलब अगर आपके पास black and white images हैं, so in order to save black and white image, 1 megabyte of memory is required. But we are given with 8 images, so it requires 8 into 1 MB. So it comes out to be 8 MB for storing black and white images. Black and white के लिए आपको 8 megabytes चाहिए. And similarly here we have one colored image which is taken with 8 megapixel. That means 8 megabyte of memory is required to save the colored image. तो total कितनी memory चाहिए? 8 MB plus 8 MB, that is 16 MB. So correct answer for this question is it's option C. 8 MB plus 8 MB, that comes out to be 16 MB. Pretty straightforward question. Next question is based on the cache memory. COA ka important topic. So cache memory, here you are given with a system with 2-level cache. Read what is given, which formula will you be using, and accordingly return the answer. Just read the statement, identify that what is given and what you are supposed to find out. Do you want to try this question? All right. Now this is saying that consider a system with 2-level cache. आपके पास 2-level cache memory है and the access times of level 1 and level 2 and main memory are given to you. So this means that let's say access time for level 1, T1 से मैं represent कर रही हूँ. This is representing the access time for level 1. Similarly, T2 is representing the access time for level 2 cache memory and TM is representing the access time for the main memory. This is given as 0.5 nanoseconds, 5 nanoseconds,
and 100 nanoseconds. The hit rates of the level 1 and level 2 are 0.7 and 0.8. So hit ratio for level 1 is 0.7 and hit ratio for level 2 cache is 0.8. So if we know the hit ratio, easily we can identify the miss ratio. Miss ratio क्या होगी? 1 minus H1 will be representing the miss ratio for level 1. This is miss ratio. So H1 is given as 0.7. So this comes out to be 1 minus 0.7. That is nothing but 0.3. Similarly, the miss ratio for H2 is 1 minus H2. That is nothing but 1 minus 0.8. So it comes out to be 0.2. Now, what is the formula? यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताया हुआ. It is simply saying that what is the average access time. आपको average access time बताना है system का by ignoring the search time within the cache. तो जब आपके पास level 2 cache है, सबसे पहले हम level 1 में search करेंगे. So let me write a detailed formula here and then we'll be substituting the values. Average access time. I'm so sorry. All right, let's go to the next slide. Oops. Okay, so we were talking about this question. Hope the question is visible. All right, so we were talking about this question. Very good evening, Neha. So here we have discussed that the access time for level 1 is 0.5 nanoseconds. 42 it is 5 nanoseconds, and for main memory it is 100 nanoseconds. Hit ratio is given as 0.7 nanosecond for level 1. Hit ratio for level 2 is given as 0.8. 0.8. So on the basis of the hit ratios, we can calculate the miss ratio. Miss ratio for level 1 is, we have calculated 1 minus 0.7, that comes out to be 0.3. And similarly, the miss ratio for level 2 will be 1 minus H2, that comes out to be 1 minus 0.8, which is 0.2. Now, we have to identify the average access time of the system, ignoring the search time within the cache. So if I write the detailed formula, so what is the average access time? Average access time will be, first of all, will go to the level 1 cache. तो अगर level 1 में आपको data मिल गया, then we have to consider the access time H1 T1. H1 means the data is available in the level 1 cache. तो आपने उस data को access करने के लिए we have used the access time of the level 1 cache.
हो सकता है कि लेवल 1 में नहीं मिले, दैट मीन्स देयर इज अ मिस इन द लेवल 1 कैशे, सो इट विल बी 1 माइनस H1. तो सबसे पहले आपने लेवल 1 में सर्च किया, लेवल 1 में नहीं मिला, देन यू आर सर्चिंग, यू आर गेटिंग द डेटा फ्रॉम लेवल 2. हो सकता है लेवल 2 में इट माइट बी अवेलेबल. तो first of all we have accessed the level 1 cache in order to search, but nahi mila, then you are getting it from level 2. May be the case the required information is not available in level 1 cache, level 1 may be miss ho gaya, level 2 may be miss ho gaya, then definitely it will get it from the main memory. Main memory mein hamesha hit hoga, there is no possibility of getting a miss. So here first of all we have searched the item in the level 1, search kiya, फिर level 2 में search किया, level 2 में भी नहीं मिला, फिर हम किस में आ गए, main memory. But in the question, it is given that ignore the search time. Ignore the search time. We have to ignore the search time. So अगर हम search time ignore करते हैं, then our modified formula will be average access time will be, जो T1 है that is data मिल गया, आप access कर रहे हो, this is not the search time. लेवल 1 में नहीं मिला, तो लेवल 1 में आपने जो भी टाइम स्पेंड किया दैट इज द सर्च टाइम. सो सर्च टाइम हमें इग्नोर करना है, सो विल नॉट बी टेकिंग दिस टाइम बिकॉज दिस इज द सर्च टाइम. T1 में नहीं मिला, that means this was the search time. T2 में भी नहीं मिला, that means this was the search time. So here we'll be getting T2 plus 1 minus H1, 1 minus H2. There is a miss in level 2 cache, and finally we got the data from the main memory. Now you just need to substitute the values and let me know, just do the calculation and let me know what will be the answer. Average access time. So we have the formula H1 T1 plus 1 minus H1 H2 T2 plus 1 minus H1 1 minus H2 and main memory access time. Substitute the values and let me know what answer, what value are you getting. So H1 is given as 0.7 into 0.5 plus 1 minus H1 is 0.3, H2 is 0.8 into T2 that is given as 5 nanoseconds plus 1 minus H1 0.3, 1 minus H2 0.2 and main memory access time that is 100 nanoseconds. So this comes out to be 0.35 and 40, 12 plus 1.2 plus 0.006. So this comes out to be 6. It comes out to be 7.2 plus 35, 7.55 nanoseconds. All the units are in nanoseconds, तो definitely answer आपका nanoseconds में आएगा. यहाँ पे unit conversion की जरूरत नहीं थी. So I have discussed the detailed formula, but definitely you can make the modifications to the formula according to the information, according to the data given in the question. Is this clear? Yes. So this is all about this session. In the next session, we will be discussing few more questions from COA, and then definitely we'll solve the questions from data structures and algorithms. मैं data structures and algorithms की series start कर रही हूँ, so we can solve the previous year questions. अगर आपको किसी particular topic में doubt है, feel free to write that in the comment section, or you can write your comments in the telegram group. आप chat section में लिख सकते हैं. And if you want to cover the whole syllabus in detail in the live session, then we have launched foundation batch 2.0. So in this batch you will be getting all the lectures in the live classes according to the latest pattern and the gate syllabus. And in this batch, along with the syllabus completion, we will be solving the previous year papers, previous year questions and practice questions.
प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ बेटा आपको स्टडी नोट्स भी मिलेंगे विच विल रियली हेल्प यू इन द रिवीजन, सो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस बैच. And we are also providing special mentorship for the PhD admissions in top universities. To get to know more about the details, तो screen के ऊपर आपके पास एक number आ रहा है, that is for admissions, for support, so you can make a call on that number. This is the high time for the enrollment because we are targeting to finish our whole syllabus by end of November, so that December में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास revision बचे. And mock test series important है because उससे आपकी speed बनेगी, confidence आएगा. So currently today is the last day for selection की मटकी sale, जिसमें आपको 55% ऑफ मिल रहा है along with the additional 35% ऑफ and free pass pro. So ये सारे कूपन्स, ये सारे डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद you just need to pay 8,286 and your subscription will be valid till December 24. In order to get this benefit, you need a coupon code for sure. So it is Shefali S. बाकी आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं, you can write that in the chat section. So this is the promo code. You can see that it's in the middle of the screen. And you can join the Telegram group. Link is on the top of the screen on the right side. तो इस link को join करके आप लोग Telegram group को join कर सकते हैं. उसमें जो भी आपकी queries हैं, जो भी आपके concerns हैं, you can let me know. And apart from that, on the super coaching UGC NET JRF by Testbook channel पे हमारी Monday से लेकर like we have 5 days classes on this YouTube channel. It's from YouTube classes are at 6:30 p.m. Daily class होती है, 5 days a week होती है. Thursday and Friday is off. Most probably from 1st of September we'll keep Saturday and Sunday off because many people want the weekends off. So Thursday and Friday is off. And in the master class we have, for master class, we are just solving the questions. Timing is 8:30 p.m. So whatever topic we are covering in the YouTube session, उसी के basis पे master class में questions होते हैं. So this is about the free sessions. Apart from this, जैसा मैंने आपको बताया, सुपर कोचिंग में फाउंडेशन बैच 2.0 हम लॉन्च कर चुके हैं. सो इन दैट बैच पेपर 2 की डेली 2 क्लासेस होती हैं, 1 in the morning and the 1 in the evening, and duration of each session is 2 hours. Apart from that, there are the separate sessions for paper 1. Already मैं आपको बता चुकी हूँ, सारी की सारी क्लासेस लाइव में है. To get to know more about the details, you can make a call on the number which is displayed on the screen. Bottom right corner पे आपको number दिख रहा होगा, और उसके अलावा आप description box में important links are given to you. You can just access those links and see that what is the course structure and how the things are going on. And after that, you can subscribe if you want. And definitely, if you like this video, don't forget to like the video, click on the subscribe, and hit the bell icon for getting the notifications. So this is all about this session. Thank you so much, guys. God bless you. See you in the next session. Bye-bye.